So, good morning to all of you. Good morning, respected doctors, and welcome, Dr. JP Kachhawa. Uh, we will wait another 2 minutes. I request you to wait another 2 minutes as we are expecting few more participants to join. So, another 2 minutes we will wait, and after that we can start. Meanwhile, I request all the already joined participants to mute their mic throughout the session and camera to be in so off mode so that the screen would be visible to all of you and without any obstruction you can listen to our guest speaker properly. So at the end of the session, whatever your queries you have, we will address all your queries. Meanwhile, throughout the session, if you have any questionnaires or any doubts to ask, you can put it in the chat box. So, sir, I think we can start. We have enough audience here. So, without any further delay, we will start the session. First of all, good morning and warm welcome to all the respected doctors, veterinary practitioners, and my dear colleagues for joining us today. I am Anil Patnaik and I am the host for today's webinar. Once again, requesting you all the participants to mute their mic throughout the session. At the end of the session, we will address all your queries. So I am Anil Patnaik and I am the host for today's webinar and I'm working as a group product manager at Zenex Animal Health. And it's my privilege to welcome you all to our session on role of fluid therapy in hemoprotozoan diseases. On behalf of Genex Animal Health, it's my great honor to introduce our distinguished guest speaker and subject matter expert, Dr. JP Kachhawa. Dr. Kachhawa serves as a senior assistant professor in the Department of Veterinary Medicine at Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner. He has more than 12 years of teaching and research experience, and in last 5 years he has been actively engaged in research of herbal medicine for the treatment of skin disorders, mastitis, and diarrhea in animals. His extensive expertise in ruminant medicine, particularly fluid therapy protocols for diseases like theileria, babesia, or anaplasma management, will provide immense clinical value to our field practitioners treating dairy cattle. So, uh, just 1 second. Yes. So your insights will undoubtedly elevate our treatment approaches, our field practitioners' treatment approaches in the field. So, ladies and gentlemen, please join me in giving a warm virtual applause for Dr. Kachhawa. Uh, Without any further delay, I invite you, sir, to share your valuable knowledge with us, with all the field practitioners in the field. So, over to you, sir. Thank you, Patnaik sir. Uh, and thank you for inviting me to deliver some scientific deliberations with the field veterinarians. Uh, I welcome to all veterinarians who has joined this webinar. Certainly, the topic is quite relevant. That is, I have some experiences with the fluid therapy
regarding the animal treatment. So we have to start this webinar. The topic for the present discussion is role of fluid therapy in hemoprotozoan disease. One thing I would like to share with all of you that this webinar will be delivered in dual languages, in Hindi and English both. I think uh, you will not having any problem regarding these two languages. So because many paraveterinarians are also engaged in this webinar, so they will also get some insightful knowledge for the fluid therapy because they are the helping hand for us. So let me start. One thing I would like to urge all participants that they should keep their mic off because it is uh, disturbing for the presenter. So it is requested to all of you that mute your mic so we can uh, go ahead smoothly. Very good. So the present webinar is on role of fluid therapy in hemoprotozoan disease. We know that the fluid therapy is challenging task for the field veterinarians. First challenge is that is there any really need of fluid therapy to the diseased animal, or how much it must be infused? That will be the another question. Then after the which type of fluid we need to infuse in the animal, and how much time it should be taken to uh, to infuse calculated fluid. So, and another problem is that our animal is not cooperative as much like human beings uh, for their treatment. And sometime animal owner is also hesitate in cooperating us. So the fluid therapy is a big challenge for the veterinarians. Another one challenge that is rises day by day, the hemoprotozoan disease. We know that the hemoprotozoan disease, particularly four diseases are quite common in our country. That is babesiosis, thalidosis, anaplasmosis, uh, and trypanosomosis. Uh, all four diseases are prevalent. Out of them, the trypanosomosis is participating around 43%. That is highly prevalent in cattle, buffalo, and other equine also. Followed by the thalidosis that contribute 20%, and anaplasmosis, and then babesiosis. So anaplasmosis, thalidosis, and babesiosis is the tick-borne disease, and while the trypanosomosis is fly-borne disease that is transmitted by the tetanus fly. Uh, the This hemoprotozoal disease causing severe impact on economy of the farmers, that is related with the economy of the country. So the livelihood of animal owners is quietly affected with the hemoprotozoal disease because it having the direct impact on the mortality of animals. It is cause of reduction in the productivity, particularly in the milk production. It also impact the fertility cycle of the animals. So infertility is become a challenge because the protozoan disease causes the severe anemia, loss of electrolyte, and loss of sometimes loss of um, minerals also. So the minerals like copper, iron, is zinc, etc., playing important role in the fertility of the animals. Another one thing is the cost of treatment is increasing day by day because there is a uh,
Reports of resistance occurring toward the anti-protozoal drugs. We are now facing resistance towards the diamine acetate and even buparvacin also. In an estimation that is conducted by the Narledkar, that the thyroidosis and babesiosis is posing high impact on the country. In his estimation, he proposed that the around 8,000 crore rupees due to the thyroidosis and around 600 crore rupees due to the babesiosis is losing annually. So the impact is so high. Another thing is the diagnosis of this protozoan disease is very important. The Babesia, Theileria and Anaplasmosis showing the high-grade fever in all animal species and eyes, and the Trypanosomosis is showing the intermittent fever. The babesiosis is causing the coffee color urine or the Coca-Cola color urine that can be easily identified. While the other protozoan disease hypersalivation. In the laboratory examination, blood smear helps very good. The identification of the organism in the intracellular parasites like Babesia, Theileria, and Anaplasma. These are the intracellular parasites and can be easily identified in the blood examination. While the trypanosomes are the extracellular parasites and they have the flagella and with the help of their metabolicity in wet blood smear, we can easily identify. So come towards to the fluid therapy. As we know, हम जानते हैं कि देखो जो अर्थ पे है, अर्थ पे जो टोटल फ्लूइड है या जिसको हम पानी कहते हैं, पानी और जो लैंड का रेशियो है वो उतना ही है जितना बॉडी का है और बॉडी में जो फ्लूइड है उतना, यानी कि 1/3 जो है लैंड है और 2/3 वाटर है, वैसा ही पूरी बॉडी में 2/3 वाटर है. That is further can be subdivided in the body. That 1/3 is ECF and extracellular fluid, and 2/3 is intracellular fluid. Intracellular fluid is in the form of cytoplasm, and the extracellular fluid further can be subdivided in 1/4 is plasma, that is in the blood vascular system, and 3/4 is interstitial fluid in form of synovial fluid, CSF, GIT fluids, bile, cartilages, and dense connective tissue fluids. The balance of body water is maintained by intake of water. Water intake is daily 45 to 50 ml per kg body weight by drinking water, and some water is produced through the metabolic reactions like biological reactions, that is 5 to 6 ml per kg per day. The loss of water from the body is divided in sensible losses, that is form of urine and feces, that is 20 to 30 ml per kg body weight, and insensible form like panting, sweating, and perspiration, that is 20 to 30 ml per kg body weight. These balances is maintained by maintained by the intake of water and loss of water. If there is any ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? losses, then ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? there will be dehydration. When the losses is more than there will be water losses or dehydration there, and the common water losses in animals in the form of vomiting, diarrhea, polyuria, blood losses, ascites,
etc. So the dehydration can be assessed by the taking the proper history, serial body weight monitoring, physical parameters and laboratory parameters. The history plays important संबंधित in the assessment of the dehydration, because if we asked to the animal owner about the proper offering of water, uh, and if the animal is offered proper water or having the free access to intake the water, this will certainly help us in the diagnosis of the dehydration. Further, the serial body weight monitoring also help us कि जैसे ही हम जानवर को का वजन हम रोज नापेंगे कि आज कितना वजन है, कल कितना वजन था, अगर वजन में कमी आ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से बॉडी से फ्लूइड लॉस है और वो इंडिकेट करता है डिहाइड्रेशन। कुछ फिजिकल पैरामीटर्स जैसे हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन, सनकन आइज, सीआरटी, स्किन टेंटिंग, पल्स रेट, पल्स क्वालिटी मेंटेशन और बॉडी टेम्परेचर, ये भी डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है अगर स्टिकी है और ड्राई है तो ये इंडिकेट करता है कि डिहाइड्रेशन। ऐसे ही जो आइज है, आई बॉल में वो डीपली चली जाती है, दैट इज कॉल्ड सनकन आइज और रिसेशन ऑफ आइज। इट इज आल्सो a good indicator for the dehydration. Likewise, this capillary refill time जब जैसे इंक्रीज होता है वो भी एक इंडिकेटर है। स्किन टेंटिंग टेस्ट ये गुड फिजिकल एग्जामिनेशन का बहुत अच्छा मेथड है डिहाइड्रेशन को मेजर करने के लिए। तो हाँ, इसको हम आगे की स्लाइड्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। पल्स रेट डिहाइड्रेशन के केस में इंक्रीज हो जाएगी एंड पल्स क्वालिटी आल्सो अल्टर्ड। द पल्स बिकम feeble, less feeble, and or even sometimes in severe dehydration it may be obliterate, यानी कि गायब हो जाती है, फील नहीं होती। The mentation, it means the mental status of the animal. जब डिहाइड्रेशन होता है सीवियर डिहाइड्रेशन तो इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस होते हैं, फ्लूइड लॉसेस होते हैं, तो मेंटली स्टेबल नहीं होता है एनिमल और नर्वस साइन शो करता है। ऐसे ही पेरिफेरल और कोर टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन के केस में जो कोर टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ज्यादा होता है और पेरिफेरल टेम्परेचर कम होता है। अब हमको यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द कोर टेम्परेचर एंड व्हाट इज द पेरिफेरल टेम्परेचर। The core temperature means the temperature of the visceral organs. When we take the temperature from the rectum, rectal temperature, that is indicating the core temperature, and the peripheral temperature means the temperature of the body surface. बाहर का हम उसको फील करेंगे तो बाहर ठंडा महसूस होगा और रेक्टल टेम्परेचर हमको ज्यादा मिलेगा। तो ये जो दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस है ये भी हमको इंडिकेट करता है डिहाइड्रेशन। कुछ क्लिनिकल साइन और स्किन टेंटिंग टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि कितना परसेंट डिहाइड्रेशन एनिमल में हो रहा है। अगर 5% या इससे कम 5% से कम डिहाइड्रेशन है तो हमको कोई भी क्लिनिकल साइन देखने को नहीं मिलेगा। अगर 5% तक डिहाइड्रेशन आ रहा है तो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो विजिबल म्यूकस मेम्ब्रेन है, लाइक कंजक्टिवाइल म्यूकस मेम्ब्रेन, वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन और रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन, ये ड्राई हमको फील हो। और अगर जो डिहाइड्रेशन है अगर 6 से 8% के आसपास है तो स्किन टेंटिंग टाइम जो है दैट इज अराउंड 2 to 4 सेकेंड, और उसमें ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ हमको सनकन आइज भी देखने को। If the percent dehydration is rises around 8 to 10%, then the skin tenting time will also increase around 8 to 10 seconds. And other clinical sign like mucous membrane, sunken eyes, dry mucous membrane, sunken eyes, increased pulse rate, and increased CRT. अगर 10 से 12% डिहाइड्रेशन हमको मिल रहा है तो जो स्किन टेंटिंग टाइम है वो 20 से 45 सेकंड हो जाता है, और सीआरटी का इलंगेशन और जो है ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, इवन एनिमल
showing the clinical sign of hypovolemic shock. More than 12% dehydration hai, it means animal is near to death. There will be circulatory or hypovolemic shock. Some laboratory parameters also help. The in PCB, total protein, blood urea nitrogen, and specific gravity of urine will increase in case of dehydration. So the PCB greatly help us in the deciding the percent dehydration. The normal PCB range 40 to 45, indicating the 4 to 6% dehydration. If the PCB is around 50%, then there will be chances of 6 to 8% dehydration. The 55% PCB indicating 6 to 10% dehydration, and PCB more than 60 indicating the 10 to 12% dehydration. I am suggesting you people that you should also consider all other parameters simultaneously besides the PCB, because PCB alone is not a solid indicator of the dehydration. It may also change in other conditions. अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमको कितना फ्लूइड एनिमल को देना है। तो जो एनिमल का जो बॉडी फ्लूइड है वो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। पहला है वॉल्यूम डेफिसिट, कितना वॉल्यूम अभी कम है। मेंटेनेंस वॉल्यूम, मेंटेनेंस जो बॉडी को मेंटेन करने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, एंड ऑनगोइंग लॉसेस। 3 पैरामीटर्स पे ये टोटल रिक्वायर्ड फ्लूइड है वो काउंट होता है ना। तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहला है फ्लूइड डेफिसिट। तो डेफिसिट फ्लूइड का कैलकुलेशन के लिए सीधा सा फॉर्मुलेशन परसेंट डिहाइड्रेशन मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, that is converting factor of ml into liter, and 0.8, that is also a factor, that is the requirement factor. तो इसको हम कैलकुलेट करें, इसमें परसेंट डिहाइड्रेशन है वो हमको जैसे हम अगर 6% काउंट कर रहे हैं तो वी शुड नॉट मल्टीप्लाई बाय द 6, इसका मतलब है कि वी शुड मल्टीप्लाई बाय द 0.06, देन आफ्टर आवर कैलकुलेशन विल बी फाइन। तो दूसरा है मेंटेनेंस फ्लूइड, हमको कितना चाहिए इन ml। तो there is also a formula 30 multiplied by the body weight, and after that we should add 70. Ongoing losses we can roughly calculate it that in per vomit 4 ml per kg per vomit there will be losses. In diarrhea 200 ml per episode of diarrhea, that is calculated. And the losses in urine, we can measure the urine with the measuring cylinder, the total output of that urine, by that we can calculate simply. And next question is what will be the goal of our fluid therapy? The first goal should be correct the water imbalance, and another one is to expand the blood volume in case of hypovolemic shock, correct the oncotic pressure, correct the acid base balance, and if there is any loss of blood component, then we should infuse the blood component or whole blood. Next is type of dehydration. The dehydration is basically 3 types. Isotonic dehydration, where the water and solutes loss equally. In hypertonic dehydration, there is loss of salt is more in comparison with the water. In hypertonic dehydration, where the water losses is higher than the salts.
In the isotonic dehydration is most common dehydration. Mainly, this type of dehydration is commonly seen in case of hemoprotozoan disease. So, and other causes are the diuretic therapy. When many times animal owner complain करता है कि वो कि हमारा जानवर साहब पेशाब नहीं कर रहा है, तो जो हम क्या करते हैं कि सीधा उठा के उसको डाययूरेटिक दे देते हैं, जिसमें फ्लोजेमाइड कॉमनली हम काम में लेते हैं। हमको पहले असेसमेंट करना चाहिए कि जो यूरिन नहीं कर रहा है वो किस वजह से नहीं कर रहा है, कहीं उसके ऑलरेडी डिहाइड्रेशन तो नहीं है। फिर हम अगर हम डाययूरेटिक लगा देंगे तो ये डिहाइड्रेशन को और ज्यादा एक्सेसरबेट करेगा और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। एक्सेसिव वॉमिट के लॉसेस में पर्टिकुलरली इन डॉग और कैट में हमको ज्यादा देखने को मिलता है। एक्सेसिव यूरिन जहाँ पे पॉलीयूरिया की कंडीशन है वहां भी इसी तरह का डिहाइड्रेशन मिलता है। हेमरेजेस है ना, ये हेमरेजेस आपका जो एकाइमोटिक हेमरेजेस और एक्स्ट्रावेसिव हेमरेजेस है, उसमें इसी तरह का डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। एक्स्ट्रावेसिव हेमरेजेस हमको एनिमल एक्सीडेंट में भी देखने को मिलता है, जब कोई मेजर आर्टरी या मेजर वेन है वो कट हो जाती है या उसको रप्चर हो जाती है, तो बहुत ज्यादा ब्लड का लॉसेस होता है, वहां पे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हमको देखने को मिलता है। कभी कभार जानवर को फ्रीली एक्सेस नहीं होता पानी पीने का, तो वो जो फ्लूइड इंटेक है वो कम हो जाता है। स्वेटिंग की प्रॉब्लम्स भी रहती है, जैसे हॉर्सेज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्वेटिंग में, वहां भी हमको आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हमको देखने को। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन जो है हमको डायबिटीज इंसिपिडिस में कॉमनली देखने को मिलता है, फॉरविल ने स्कीम कड्डी सी ज्यादा होता है। मार्च और पिछले कभी कभी जो है जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो ज्यादा लॉसेस में हो जाता है। और कभी कभी जो हाई फीवर के केसेस में, है ना, तो जब हीट स्ट्रोक वगैरह की कंडीशन होती है वहां पर भी इस तरह का केस को देखने को मिलता है। द हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, जिसमें जो है कि जो लॉस ऑफ सॉल्यूट है, हमने पहले भी बात करी है, वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू वाटर। तो ऐसे हमको साल्मोनेलोसिस में जो हॉर्सेस है उसमें साल्मोनेला की कंडीशन में जो एंट्राइटिस होती है, तो वहाँ पे हमको एक कंडीशन देखने को ज्यादा मिलता है। तो हाँ, ऐसे केसेस में जो तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है और तुरंत ही इलेक्ट्रोलाइट की आवश्यकता है। तो ऐसे केसेस में हम जो बोबिलाइट है इस तरह के फ्लूइड हम इन्फ्यूज कर सकते हैं, तो ये हमको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कभी कभी हाँ जो हाँ फ्लूइड है वो हमको आइडेंटिफाई नहीं होते कि ये किस तरह का फ्लूइड है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लूइड है दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलोइड फ्लूइड्स और कॉलोइडल फ्लूइड्स। जो क्रिस्टलोइड फ्लूइड है दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन। तो आइसोटोनिक फ्लूइड है वो हाँ हमारे कॉमन रिंगर सिलेक्टेड सॉल्यूशन जो इजीली हमको आइडेंटिफाई हो जाता है, नॉर्मल सलाइन है और 1.3% सोडा बाइकार्ब है, ये आइसोटोनिक फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। हाइपोटोनिक फ्लूइड है जैसे कि 0.45% सलाइन, यानी नॉर्मल सलाइन का हाफ, और 2.5% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज, ये भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ही आता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे हमारा वो डीएनएस हो गया, 50% डेक्सट्रोज, 25% डेक्सट्रोज, 7.5% सोडा बाइकार्ब, और जो बोबिलाइट जैसे जो फील्ड में अवेलेबल सॉल्यूशंस, और कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में काउंट होगा। तो जहां जिस तरह का डिहाइड्रेशन है हमको उसके हाँ जो उसके अकॉर्डिंग ही हमको जो है फ्लूइड को इन्फ्यूज करना चाहिए। हम आइसोटोनिक फ्लूइड की बात करें, इफ यू इन्फ्यूज आइसोटोनिक फ्लूइड लाइक रिंगर्स लैक्टेट or normal saline, then when it enters in the body and it subdivided in the plasma and interstitial
fluid chamber, it will not go in the ICF. So it replaces the acute abnormal losses of fluid. In case of hypotonic infusion of fluid, like 5% dextrose, it is distributed in three compartments, in all three compartments, in plasma, ICF, and ISF. So maximum part of the hypotonic fluid undergoes in the ICF. In the hypertonic infusion, that is 5%, like 5% dehydration. It is also distributed in all three chambers. These are the common electrolyte composition of commonly used isotonic and hypotonic fluids, like 0.9% saline, 0.45% saline, ringer selected, and normal solar. So we talk about the crystalloid and colloidal fluids. These are the osmolarities of the fluids. We know that the normal osmolarity of our plasma is near about 300. And the isotonic fluid also having the osmolarity 275 to 300. But the hypotonic solutions having the osmolarity below this 275 osmol, and the hypertonic solution having the osmolarity more than normal level of plasma. That means more than 300 milliosmol. We should talk about the body about the fluids that is being commonly used in the field condition, their indication and their contraindications. First of all, we will take ringer selected. The ringer selected solution can be given in large amount without having any risk of electrolyte imbalance, because it is the isotonic fluid, and pump up the problems of electrolyte losses and water losses. So when we require some electrolytes, we should give ringer selected, particularly in case of diarrhea. As we know, in the diarrhea, there is severe losses of bicarbonates and potassium. So it will help in the meet out these losses. This is the fluid of choice in case of diabetic ketoacidosis that is commonly occur in the buffaloes, particularly. And this also help in correction of the mild acidosis and in fever conditions. There is some contraindication of giving this fluid while we giving this fluid. We should keep some condition in our mind that the animal is should not be suffering with the severe hypoxia or liver disease, because the lactate present in the ringer selected solution, that is metabolized in the liver, so it will causing the extra burden over the liver. In case of uremic animals, in case of animals having the vomiting, like dog, cat, and horses, and we should also avoid in blood transfusion, because in vomiting there is metabolic alkalosis because of severe losses of gastric acid in the vomit. So it will further exacerbate the condition. Further, the calcium present in the ringer selected may also bind with the ampicillin, doxycycline, thiopentone, and amphotericin. So we should avoid ringer selected with
with these diseases, these drugs, particularly the ampicillin and tetracycline group antibiotics. The 5% dextrose it is mainly given for the energy purpose. When direct energy is needed, not much fluid is not much water is required, then we should give this fluid. So, but we have to keep some indications in our mind that this can be given in case of liver injury, like uh, 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 in case of jaundice, in case of vomiting, in case of high grade fever, it is very useful. But the contraindications are there if the animal having the cerebral edema, acute ischemic shock, hypovolemic shock, blood transfusion, hyponatremia, it should not be given. It is the best fluid for the post-operative fluid therapy. And the isotonic fluid, as we know that it is distributed mainly in the plasma and not goes in the intracellular fluid chambers. So this type of fluid is helpful in case of babesiosis where hemoglobinuria is common. So it restored the total circulating volume. So most of time the animal goes in the isotonic dehydration. So we can use this type of fluid normally. The 5% DNS, it is the hypertonic solution. It is used where the we need salts along with water, like in hypovolemic shock, alkalosis, and this is also compatible with the blood transfusion. The contraindication for this fluid is that we should not give in case of pulmonary edema, in CHF cases, renal disease, and liver cirrhosis condition. Dehydration with severe hypokalemia, as it does not provide any potassium electrolyte. Further, it dilutes the potassium ion also, and that is shedded in the urine. D25% or D50% is indicated in severe hypoglycemic condition, particularly in case of renal diseases. Because in renal disease, there is severe, there is less perfusion of blood in the kidney. So when the energy requirement is more and fluid requirement is less, then we can infuse this fluid. This is also indicated in case of diabetes and diabetic ketoacidosis and ketosis. So D25% and D50% is good fluid of choice in case of ketosis. There are some colloidal solutions also. The colloidal solutions can be further subdivided in two categories: natural colloidal solutions, that is plasma or human albumin, and other is synthetic colloidal solutions like dextran 40, dextran 70, anti-starch, etc. The synthetic solutions having the more molecular size in comparison to natural colloidal solutions. These dextran are produced by the enzyme dextran sucrase during the growth of various strains of Helicobacter bacteria in media containing the sucrose. Dextrans are isotonic and can be stored at the room temperature. Dextran is break down completely to CO2 in water.
by dextranase enzyme present in liver, spleen, kidney, brain, and muscles also. So both dextran 14, dextran 17 are platelets and red blood cells, and co-polymerize with the fibrin. So it having the antithrombotic effect in the disseminated intravascular coagulopathy. It may cause adverse reactions like anaphylactic reactions. So we should monitor always while we are infusing the dextran 40 or dextran 70. Starch, that is the the parent name of a polymeric molecule made from the abaxi species of either maize or sorghum, and is composed primarily of the amylopectin suspended in Ringer's lactate solution. So the in the form of starch, the wet plasma is available in the market. The wet plasma contains the hydroxyethyl starch, which is synthetic colored volume expander that is used to maintain vascular volume in animals with circulatory shock, used primarily to treat acute hypovolemia. It can increase total blood volume up to the 12 to 48 hours. Theta starch should be administered at the dose rate of 5 to 10 ml per kg body weight in the dogs, and 8 to 10 ml per kg body weight in the large animals in the form of boluses initially. Then after you can infuse drop by drop. This having the property that it is non-toxic and non-allergen, and it is also less expensive. Another colloidal solution is albumin. The concentrated human albumin solutions are now available for use in veterinary practice. This is used to treat hypoalbuminemia. Sir, sorry for the interruption. I think you are muted. Please unmute yourself first. Somebody has muted you, so please unmute. Yes, sir. It's okay now. Now you can speak, sir. Okay, sir. Yeah. So we were talking about the albumin. Albumin is mainly needed in case of ascitic cases that is commonly present in small animals and large animals, fully both. So albumin infusion becoming very important because when liver diseases are there, the synthesis of albumin that is taking place at the liver level at the level of liver. So direct infusion of albumin maintain the colloidal osmotic pressure. So it is very important because the treatment of ascites is not so easy. It is relapse again and again until or unless the plasma oncotic pressure is not maintained properly. So this fluid is very important in case of veterinary. These are some conditions we can use proper fluid. In case of vomiting, the ideal choice for the fluid therapy is normal saline. But besides normal saline, we can also use the RL, diarrhea. D5. In case of diarrhea, the RL is choice of fluid. Diabetes
mellitus, RL is important. In hepatic failure, D5, and in case of urethral obstruction, RL is important. Acute renal failure and chronic renal failure, because the renal is important organ who is maintaining the acid-base balance and electrolyte balance. So to cope up with this condition, RL is choice of fluid. In case of hemorrhagic shock, the RL and normal saline is important. In case of heat stroke and endotoxic shock, RL is also important. Many times the veterinarians ask which type of fluid we should give in case of whole blood loss due to the accidental injury. So isotonic fluid is choice of fluid in such case. So you can give normal saline first, then after you can give RL also. So the routes of fluid administration, ये हम सब जानते हैं कि जो फ्लूइड के जो हम कॉमनली यूज करते हैं फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो हम पैरेंटल रूट यूज करते हैं, इंट्रावेनस। ये डायरेक्ट हमको जो ब्लड सर्कुलेशन में जो टोटल वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये सीधा ही हम जो मेजर ब्लड वेसल्स है उनमें जो रिक्वायर्ड फ्लूइड है वो इन्फ्यूज करते हैं। तो कभी कभी हमको ऐसी दिक्कत आती है कि हम इंट्रावेनस फ्लूइड नहीं दे पाते हैं कि जो है फ्लीबाइटिस की वजह से वेन रेज नहीं हो रही, या हमको जो वेन है वो बार बार आउट होने की वजह से वहां पे जो है फ्लूइड आउट हो गया और जो वेन अब रेज ही नहीं हो पा रही, या हम लंबे टाइम से किसी पर्टिकुलर वेन का यूज कर रहे हैं तो वो अब वहां पे जो है इन्फ्लेमेशन हो गया और अब वेन को लोकेट करने में दिक्कत आती है। तो ऐसी कंडीशन में हमको कभी कभी सबक्यूटेनियस फ्लूइड भी देना पड़ता है, या फिर हमको इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड भी देना पड़ता है। इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड पर्टिकुलरली हमको जो पेरिटोनियल लवास करते हैं उस कंडीशन में हमको देना पड़ता है, या कभी कभी हम इंट्रामेडुलर फ्लूइड भी देते हैं, इंट्राओसियस फ्लूइड, जो छोटे पप्स में या छोटे काव्स में जो न्यूबॉर्न काव्स है या न्यूबॉर्न पप्स है उनमें हम दे सकते हैं। तो ये जनरली हम जो ट्यूबुलर जो फीमर का क्रेस्ट है वहां पे हम जो है इंट्राओसियस हम दे सकते हैं। अब हमको कितना फ्लूइड देना है ये भी हमारे लिए डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। तो जो रेट ऑफ इन्फ्यूजन है वो कितना हम देवें, यानी कि जो भी हमने टोटल फ्लूइड काउंट किया है फार्मूले से, उस फ्लूइड को हम कितनी देर में चढ़ा पाए। तो इसके लिए ये 3 फॉर्मुलेशन है, तीनों में से किसी भी फॉर्मुलेशन का आप यूज करके इसमें हम रेट ऑफ इन्फ्यूजन डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे ड्रॉप्स पर मिनट, कितने ड्रॉप्स पर मिनट जाएंगे, टोटल वॉल्यूम हमको कितना है पर आवर डिवाइडेड बाय 4। अनदर फॉर्मूला है IV इन्फ्यूजन रेट, दैट इज GTT पर मिनट। GTT मींस ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ड्रॉप होता है। तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ इन्फ्यूजन मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर है वो डिसाइड करना बहुत आसान है कि जो हम नॉर्मल इन्फ्यूजन करते हैं उसका ड्रॉप फैक्टर आता है 15, यानी कि एक मिनट में जो है 15 ड्रॉप है ना, जो नॉर्मल हमारी निडल जो IV सेट है उससे निकलती। कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में ये जो ड्रॉप फैक्टर है जो BT सेट होता है उसमें ड्रॉप फैक्टर गिर के 10 ड्रॉप आ जाता है, उसका फैक्टर 10 होता है। तीसरा फार्मूला है ड्रॉप्स पर मिनट, इसमें हम इस तरह भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इन्फ्यूजन रेट ml per hour into the drop factor divided by 60. Finally, we should come to the conclusion, या इस वेबिनार से हम जो टेक होम मैसेज क्या है। टेक होम मैसेज ये है कि हमको जो है फ्लूइड का असेसमेंट
कौन सा फ्लूइड लगाना चाहिए, उसका असेसमेंट हमको पेशेंट के अकॉर्डिंग करना चाहिए। कि पहले पेशेंट को इवेल्युएट करें कि ये किस तरह का डिहाइड्रेशन है या किस तरह का जो बॉडी फ्लूइड लॉस है, उसके उसको असेस करने के बाद ही हम फ्लूइड का असेसमेंट करें कि हमको कौन सा फ्लूइड हमको एनिमल को देना चाहिए। थिंक अबाउट द टाइप ऑफ अगर हाइपोवोलेमिया है या डिहाइड्रेशन है तो हमको किस तरह का फ्लूइड देना चाहिए। कंसिडर पेशेंट फैक्टर्स, जैसे इसका एज भी इम्पोर्टेंट करता है कि हम ऐसा नहीं है कि हम जो है न्यूनेट में जो एडल्ट में चढ़ाते हैं उसी तरह का फ्लूइड न्यूनेट में या ओबेज एनिमल में या लैक्टेटिंग एनिमल्स में हम चढ़ा पाए। तो ये एनिमल फैक्टर्स भी हमको जो है देख लेना चाहिए। और देन आफ्टर वी शुड चेक द स्टेटस ऑफ द हाइड्रेशन, एनिमल हाइड्रेशन की कंडीशन देख लेनी चाहिए। तो इस पूरे वेबिनार में जो मोटी मोटी बात निकल के आती है कि हमको पहले ये एनिमल को असेस कर लेना चाहिए कि एनिमल को किस तरह का डिहाइड्रेशन है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन है या हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, उसी के अकॉर्डिंग हमको फ्लूइड को चॉइस करना चाहिए। दूसरा है कि एनिमल्स में जो है अगर एनर्जी लॉसेस ज्यादा है तो हमको इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड कराने वाले सॉल्यूशन लेना चाहिए, जैसे कि हम कीटोसिस में देखते हैं या हम रीनल फेलियर के केसेस में देखते हैं। तो वहाँ पे हम D25 या D50 जो सॉल्यूशंस हैं वो यूज कर सकते हैं, या बोविलाइट जैसे फ्लूइड है वो हम हमारे चॉइस हो सकते हैं। कुछ केसेस है जहाँ पे हमको जैसे इनमें हेमोप्रोटोजोल की कंडीशन में एनिमल रिकम्बेंसी में आ जाता है, या इस कंडीशन में आ जाता है कि सीवियर एनीमिया हो गया और एनिमल जो लॉस ऑफ कंडीशन में आ गए। तो ऐसे केसेस में हम हमारे बेट्स प्लाज्मा वगैरह है ये काफी हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें जो एनिमल को एनर्जी भी मिलती है और एनिमल का जो टोटल सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो भी मेंटेन। So this is all about this webinar, and if anybody having any query, then please you can share your query. I will try to answer that. So, thank you so much, sir, for your valuable insight and immense knowledge about fluid therapy. आपने जो शेयर किया डेफिनेटली हमारी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको फील्ड केसेस में हैंडल करने में बहुत हेल्पफुल होगा। हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, सो वन बाय वन आई विल पुट in front of you and I request you to answer those questions. So the first question is how to differentiate between babesiosis and post-parturient hemoglobinuria, because it's very difficult, and sometimes Barinil do not, give result in such cases. देखिए जो पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया है, इसमें हिस्ट्री हमको ये मिलेगी कि एनिमल या तो नियर अबाउट टू पार्चुरेट है या पार्चुरेट रिसेंटली पार्चुरेट हो चुका है। तो एक ये हेल्प कर सकता है। दूसरा है कि जो बेबिसिस है उसमें हाई ग्रेड फीवर मिलेगा। पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया में इनिशियल कंडीशन में 1 to 24 to 36 आवर्स तक हमको माइल्ड राइज ऑफ टेम्परेचर मिल सकता है, लेकिन इसमें हाई ग्रेड फीवर मिलेगा बेबिसिस। तो इसके बेसिस पे हम डायग्नोस कर सकते हैं, या फिर जो है बबेसिया में हमको जो देखने को मिलता है कि हालांकि दोनों में ही जो रेड वाटर मिलता है, तो ये जो दो फैक्टर है इनके बेसिस पे हमको क्लिनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करना है तो फिर हमको जो है ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन ही करना पड़ेगा लेबोरेटरी, जहाँ पे हम आरबीसी के अंदर पायरोप्लाज्म हम देख सकते हैं बेसिस, तो इसके बेसिस पे diagnose कर सकते हैं। Thank you, sir. One more question. What type of fluids to recommend in case of snake bite? And is it, necessary to infuse after, snake bite case? And how much fluid is required in those cases? In case of
snake bite, we should infuse isotonic fluids. So the normal saline is good choice of fluid to restore the proper circulatory volume. Because in snake bite cases, the patient that is depend on the type of snake venom. It is neurotoxic venom or the hemotoxic venom. In case of neurotoxic venom, the nervous system is severely affected. So it is also affecting the heart and consequently the total circulation. So the normal saline is good choice of fluid. But in case of hemotoxic bite, venom bite, so we also need for the electrolytes. So RL is also good choice of fluid in this case. One more question, sir. What are the major effects of infusing speedy fluid? अगर स्पीडली हम फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे दोबारा? What are the major negative impact of infusing speedy fluid? डिफ्यूजन अगर रेडिस स्पीडी फ्लूइड अगर तेज रफ्तार से अगर इन्फ्यूज किया जाता है फ्लूइड्स को तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? हाँ देखिए, ये जो डिपेंड करता है कि जैसे अगर जो एनिमल है वो ऑलरेडी वेल रिहाइड्रेटेड है, अगर उस केसेस में हम हम सलाइन चढ़ाएंगे या जो भी चढ़ाएंगे तो ऐसे केसेस में जो ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन आ सकती है और जो टोटल सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जो लंग एडेमा या सेरेब्रल एडेमा की प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकती है। या जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो सोडियम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन भी आ सकती है। तो ऐसे केसेस में हमको प्रॉपर एनिमल के असेसमेंट के बाद ही रेट ऑफ इन्फ्यूजन हमको डिसाइड करनी चाहिए। अगर सीवियरली डिहाइड्रेटेड है तो हमको बड़ी तेजी से भी हमको चढ़ाना पड़ता है ना, इवन इन द फॉर्म ऑफ बोलस कि हम 50-50 ml सिरिंज में लोड करके डायरेक्ट इन्फ्यूज करेंगे, है ना, जुगुलर में, वो भी हमको कंडीशन के ऊपर डिपेंड। So one more, sir, our participant requested to repeat the slide of volume of fluid required. जो आपने सर दिखाया, how to calculate the volume of fluid required. So one of our participants requested to explain it again. How the volume calculated? Volume, हाँ, how to calculate the volume of fluid required. वो तो जो है उस स्लाइड में पूरा फॉर्मूले दिखाई है कि हमने 3 पार्ट में हम जो टोटल फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है, फ्लूइड डेफिसिट कितना वॉल्यूम हमको डेफिसिट फ्लूइड है, मेंटेनेंस फ्लूइड एंड ऑनगोइंग लॉसेस, इसके बेसिस पे हम टोटल फ्लूइड कैलकुलेट करते हैं। अगर फिर भी हमको दिक्कत आती है कि हम इसको कैसे मेजर करें, तो एक हम रफली जो परसेंट डिहाइड्रेशन है स्किन टेंटिंग टाइम के बेसिस पे कि कितना परसेंट डिहाइड्रेशन है, उसके बेसिस पे हम जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो हमको फ्लूइड चाहिए होता है मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए, वो 20 to 25 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमको मेंटेनेंस फ्लूइड चाहिए होता है। अगर इससे ज्यादा अगर डिहाइड्रेशन है जैसे 6 to 8% या मोर देन 8%, उसके अकॉर्डिंग जो फ्लूइड है वो रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो हमको 50 ml 40 to 50 ml पर केजी बॉडी वेट से लेके हम अगर सीवियरली डिहाइड्रेटेड है यानी कि अराउंड मोर देन 10 to 12% जा रहा है, तो इवन हमको 100 to 120 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से भी हमको देना पड़ जाता है। Sir. So another question was, sir, in case of acidosis due to adulterated food, what type of fluid is recommended? The fluid of choice in case of acidosis is ringer selected.
हमको क्योंकि रिंगर्स लैक्टेट में इट कंटेन्स द lactate that is metabolized in the liver and provide the this is having the basic property, so it is the fluid of choice. In support, we should also infuse the soda bicarb. 1.3% soda bicarb solution is highly valuable because it is an isotonic fluid and it can be infused up to 2 to 3 liter in an adult animal. If but in our country this 7.5% soda bicarb solution is abundantly available. So that is in a rough calculation, 1 ml if the dehydration acidosis is there, 0.5 to 1 ml per kg body weight we can infuse. So one also participants asked that how can we detect that metabolic acidosis case? Metabolic acidosis is calculated by the assessment of losses of bicarbonate. तो इसको तो बाइकार्बोनेट हम लेबोरेटरी में असेसमेंट करा के ही एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो वहीं से कर सकते हैं कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस Any physical way to sir diagnose on the field कि metabolic acidosis हुआ है पशु को? एनिमल्स Any में physical? डिटेक्ट करना आसान है कि जो एसिडोसिस है उसको हम रूमिनल पीएच से देख के हम कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड में जो पीएच चेंजेस इतना आसान नहीं होता. अगर ब्लड में पीएच चेंजेस होता तो दैट इज डेट्रीमेंटल फॉर द लाइफ ऑफ एनिमल. तो अगर रूमिनल एसिडोसिस है वो भी इंडिकेट करता है और यूरिन की पीएच भी आपको इंडिकेशन दे देती है. तो इन दोनों को हम मेजर करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Correct. So one more question, sir. If any animal is having a temperature of 106 to 107 degree Fahrenheit and suspected of heat stroke, so what type of fluid and line of treatment is recommended in such case? In such cases, the fluid of choice is normal saline. First of all, you should give total calculated normal saline. Then after, because in heat stroke, the hypersalivation is also there. So RL also RL should be given. And sir, one doctor also asked that I feel difficulties to differentiate between anaplasmosis and theileriosis. So what are the possible symptoms to differentiate anaplasma and theileria? एनाप्लाज्मोसिस में जो है जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूस बना रहता है. थैलेरियोसिस में एक टाइम पीरियड बाद जो टेम्परेचर है दैट गोज सब नॉर्मल. And another thing is that the lymph adenopathy, जो थैलेरियोसिस है उसमें जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हैं वो सारी की सारी स्वेल हो जाती है. ठीक है. लेकिन एनाप्लाज्मोसिस में ये थोड़ा सा डिफरेंशियल पॉइंट हो जाता है, तो इसके बेसिस पे हम क्लिनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Correct. So one doctor also asked that it is not possible to calculate the exact amount of fluid based on the formula. So can you please tell us that approx volume required for 350 to 400 kg body weight animal? आई थिंक इसका रिप्लाई दे चुके हैं. तो अगर जिसे फॉर्मूले से नहीं कर पाते तो हम परसेंट डिहाइड्रेशन स्किन टेंटिंग टाइम से हम परसेंट डिहाइड्रेशन निकालें और परसेंट डिहाइड्रेशन के अकॉर्डिंग टोटल वॉल्यूम है वो पर ml पर kg के हिसाब से निकाल सकते हैं. Last question, sir. We have a fluid of choice in case of concurrent renal and hepatic insufficiency. Concurrent renal and hepatic insufficiency. That is the
we should give a ringer selected first, then after DNS. Both fluid you should give such condition. One more question we got recently, sir, और एक question आ गया. Sir, role of calcium therapy in acidosis and severe diarrhea. Role of calcium therapy in Acidosis and severe diarrhea. एक्चुअली दोनों कंडीशंस में दोनों अलग अलग कंडीशन है. तो सीवियर एसिडोसिस में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट होता है सीवियर एसिडोसिस के केसेस में. तो कैल्शियम डेफिशिएंसी की तरफ एनिमल जा सकता है. तो इन केसेस में हमको जो कैल्शियम थेरेपी हमको कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, हमको दे देना चाहिए. जो डायरिया के केसेस है, डायरिया के केसेस में जो कैल्शियम अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट इंक्रीजेस द intestinal motility. Hypermotility will be there, and so it will further aggravate the condition. So we should avoid in case of diarrhea, calcium infusion. So another question, sir. Actually, our participants are very, keenly interested on this topic. So one by one, we are getting it. So और एक सर हमारे सर पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि इन hepatic insufficiency can we give RL? I think you have given the answer for it, and it is the recommended fluid therapy for in case of hepatic insufficiency. So this is the, I think, the right fluid to give. One more question, sir. Which fluid used in blood diarrhea, and if doctor use a wet plasma, so which antibiotics we suggested in? The type of diarrhea is very important. What is the exact etiology of the diarrhea? So in case of colibacillosis or salmonellosis, the RL should be given. RL तो देना ही देना है in any case of any type of diarrhea. चेक करिए मैं भाई. तो Yes, sir. Yes, sir. You can proceed. थोड़ा सा मिस कर गया. हाँ सर, एक क्वेश्चन ये था कि which fluid used in bloody diarrhea, and if doctor use wet plasma, so which antibiotic we suggested him? एंटीबायोटिक जो है वो उसके लिए मैं कहना चाह रहा था कि डिपेंड ऑन द पॉजिटिव एजेंट. बट द sulfur drugs is very good, effective in case of diarrhea. But if we given parenterally, we should avoid oral use of antibiotics. It is not suggestive to use the oral antibiotics because of the problem of antibiotic resistance. Okay, sir, one more question. Can we use a plasma volume expander like a wet plasma along with other IV fluids? We can use. I think it is recommended, and in many cases, doctors are using the combination of both type of fluid. So another question, sir. Role of soda phos powder and injective phos in babesiosis. Which one is more advantageous? There So, is no इनमें use से- of soda phos and injective phos in case of babesiosis. No use. Right. So in case fluid should be used in severe diarrhea with fever. RL is good. RL is the top choice. Yes. Thank you so much, sir. I think we have addressed all the questions and queries of our all participants from the field, and thank you once again, sir, for your valuable insight and your immense knowledge you shared with all our respected doctors and field practitioners. So, and I also extend my gratitude to Dr. Akanksha also for taking the major role in organizing this webinar. So thank you, Dr. Akanksha, and
also to all the participants for sharing your valuable time with us. And obviously, sir, we will share a participation certificate for all the participants through mail. Thank you once again, and have a Sir, good day. Doctor sir, I'm audible. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Any question? Yes, yes. Yes. You can ask, sir, by Sir, unmuting good yourself. afternoon. Doctor sir, good afternoon. Myself, Dr. Sandeep. I'm highly thankful to all Zenex entire team and Dr. JC's. डॉक्टर साहब एक्चुअली मेरे को ज्वाइन करने में ना ड्यू टू नेटवर्क इशू मैं थोड़ा लेट हो गया था क्या इसकी कुछ स्लाइड्स पीपीटी या वीडियो रिकॉर्डिंग लिंक मिल सकता है लेटर ऑन इफ यू शेयर ये आप पटनायक सर से ले लीजिएगा, इन्होंने जो शायद रिकॉर्डिंग की होगी पूरे वेबिनार की, तो यस यस हमने रिकॉर्डिंग किया हुआ है एंड वी विल शेयर सर डेफिनेटली जी Yes. शेयर कर देंगे आपसे. Yes, sir. थैंक यू सो नाइस ऑफ यू So thank you very much, sir, for inviting me to deliver my insights to the field veterinarians. I think it will definitely benefited you the treatment of animals in the field condition. So it will be a good support to me and maintaining my enthusiasm to deliver such knowledgeable seminars for the field veterinarians. So thank you very much, sir, for inviting me. Thank you all participants to listen carefully or listening, and I think to bear me for more than 1 hour. So thank you all. Thank you. Thank you so much, sir. But at the end of the session, just I would like to, portray our the fluid therapy range. मैं एक बार just have आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि हमारा जो फ्लूइड थेरेपी रेंज है, जेनेक्स ऑल्सो हैव सम products. So first is wet plasma, as many times Dr. Kachhawa also mentioned about this product. It's a plasma volume expander, and in hypovolemic cases or ruminal acidosis, dehydration, or in case of diarrhea with the combination of normal saline, you can or ringer lactate, you can use wet plasma. It's contain hydroxyethyl starch and very deeply explained by Dr. Kachhawa. Also, we have Boromec G, a milk fever formula. It's basically for milk fever complex for hypocalcemia, hypomagnesemia, just after parturition. If animal is suffering from such type of cases, you can use Boromec G. In case of hypocalcemic condition, only hypocalcemia if you are finding in the field, or in case of requirement of IV calcium in conditions like mastitis or metritis or ROP, जहाँ पे only calcium देने की जरूरत पड़ती है, और abomasum displacement, you can use this colidrops G also, and with 20% dextrose, where immediate energy, as mentioned by in certain renal hepatic renal failure cases, or heat stroke cases, you can use Bobilite also. So all these products we have in all the counters or your nearby retailers. So thank you so much once again, sir, Dr. Kachhawa, for sharing your valuable insight, and thank you all participants. Have a good day.